everyone, good afternoon. I hope you all can hear me. Hello everyone, hello. Good afternoon. I can see more people are joining in. Let me see if the research team has joined in or not. I hope you all can hear me and see me. Can you provide any swing wizard जी जो हमारे swing trades होते हैं वो generally afternoon session में नहीं morning session में होते हैं. We will be sharing BTST although. Okay, in a construction, I can see stock queries coming in. We'll wait for research team to join in, and I can see sir is here. Sir, I have accepted the request. Please join in. Yes. Can you hear me, sir? Yes. Am I audible? Yes, sir. You are clearly audible. Okay, perfect. So give me 1 minute. I just share my screen and then Sure. we'll Mokshi, we will try to do the hero zero. Being honest, not exactly hero zero, but we will try to give a good trade. यहाँ पे we book some profit. So I can see some people are writing ki sir joining for the first time and stuff. So good afternoon everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal. You see me daily hosting these sessions and managing your queries. जो हमारा morning session होता है at 9:30 AM that focuses more around stocks and equity. जो हमारा afternoon session होता है जहाँ पे आप अभी हैं, this focuses more around derivatives every day. So जैसे आज Tuesday, आज FINNifty expiry है तो आज हमारा focus उस पे रहेगा. Apart from that, today we have gold mini and silver mega expiry at 6 PM as well. So don't forget to join in, guys. And like every FINNifty expiry, we have Nikun sir with us. Nikun sir, can you hear me? Yes, I can hear you. My screen is visible, right? Yes, your screen is visible. The stage is all yours. Feel free to join, take control and start the session. Perfect. So good afternoon, everyone. Good afternoon, Anuj. Welcome to the monthly expiry of FINNifty, which is the Nifty Financial Index. So we'll start with Nifty की बात करते हैं. Nifty almost kissing its all-time high, which was 25,078. आज 25,073 का हाई किया है, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास आया है. तो कल गैप अप हुआ था और गैप अप के बाद आज फॉलो अप बाइंग देखी गई है. तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू है निफ्टी में. तो जब तक 24,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 24,800 24,750, तो निफ्टी में बार डिक्लाइन स्टैंस कंटिन्यू रहना चाहिए और ऊपर में 23,000 25,300 और 25,500 स्लो एंड स्टेडी वी कैन स्केल टू दोज लेवल्स ऑन द निफ्टी इंडेक्स. कल के गैप अप के बाद अच्छा बाइंग देखा गया है, तो 25,078 जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर निकल जाता है तो और स्विफ्ट मूवमेंट आ सकता है 200-300 पॉइंट का ऑन द निफ्टी. निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो बॉटम से अच्छा रिवर्सल देखा है, डबल बॉटम पैटर्न बना है ऑन द डेली स्केल और एक रेंज भी निकला है, बट थोड़ा मोमेंटम और मिसिंग है बैंक निफ्टी में. बट द गुड पार्ट इज दैट इट इज होल्डिंग इट्स गेन्स. इवन आज भी हम देखें तो नीचे में 50,900 के आसपास गया था, लेकिन नीचे से अच्छी रिकवरी देखी गई है बैंक निफ्टी एज वेल, मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन आईसीआईसीआई बैंक जो एक लीडर है. Even Axis Bank is trying to participate in the move, and from the PSU, State Bank of India, which has a considerable weightage in the Nifty Bank, is trying to its best to get the index on the higher side. तो जब तक 50,800 के ऊपर है बैंक निफ्टी, buy on decline stand should continue in बैंक निफ्टी as well. ऊपर में 1,800 and 52,200. These are the levels that we can work with. थोड़ा सा momentum slow रहेगा, it won't be as swift as Nifty, but जब तक 50,800 के ऊपर है, we expect it to head higher towards 51,800. FINNifty की अगर बात करें जिसकी आज एक मंथली एक्सपायरी है, तो हमने देखा है कि फर्स्ट आवर में एक स्विंग था वेरिन ऊपर से थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया था, लेकिन नीचे में कल के लो के आसपास 23,280 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाई देखी गई और वहां से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा गया था. बट पोस्ट 11 PM ऑलमोस्ट 12 PM
थोड़ा सा साइडवेज हो गया है फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट बोले तो 40-50 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 23,000. सो द रेंज दैट वी आर वर्किंग विद फॉर द एक्सपायरी पर से इज 23,550 on the lower side and 23,620. So this is the range that we are working with for the expiry per se. अगर फिन निफ्टी की वीवैप्स की अगर बात करें तो वीकली वीवैप है 23,380. So we are almost 200 points above the weekly VWAP, while monthly VWAP is at 23,020. So we are almost 500-550 points above the weekly monthly VWAP as well. So we are trading out both the VWAPs, so which clearly indicates that buying we have to be on the buy side, and buy and dips stand should be continued on the fin nifty. तो एक स्ट्राइक जो हमारे रडार पर है दैट इज 23,500 का कॉल ऑप्शन. currently it is quoting at 87-88. So what we can do is we'll share the buying range wherein you can buy the 23,500 call option between 60 to 65 and keeping a stop of 45 and looking for a target of 85 to 98. So strike वापस मैं रिपीट करता हूँ, बाइंग लेवल्स एज वेल एज स्टॉप लॉस 23,500 का फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन, बाय बिटवीन 60 to 65, कीप अ स्टॉप ऑफ 45 and look for 85 to 98 on the higher side. So you can pin the message, Anuj. Yes, sir, I've done. FINNifty 23,500 call, buying 60-65, stop loss 45, target 85 to 98. Perfect. So this is the trade setup that we are working with. अगर कुछ in between change होता है, if we try to modify our buying range, we'll surely update on the same. And if the buy gets triggered, we'll again update on the same. As of now, नीचे में 75 आया है maximum. So we'll wait for our buying range to be triggered, and then we can go forward with the trade. And in the meantime, I think we can take a few queries if we have. Sure, sir. It will be great if we can start with fact. It was given as a morning intraday trade. Okay. I think fact, even the whole fertilizer as a basket has been doing good. Fact being the usually makes a leading move in the whole fertilizer pack. तो नीचे में 960 का एक strong support है, तो 960 जब तक break नहीं करता है, I think you have to continue to be long in fact. Sir, And look for ऊपर में 1020 या 1050 के टारगेट्स के लिए. Suzlon, again, every day we get the same query. Favorite है, नीचे में 74 और 73 का strong support है, तो जब तक वो 68 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक you have to be long in Suzlon. ऊपर में एक ब्रेकआउट आता है 80 के ऊपर, तो स्लो एंड स्टेडीली 85-87 के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं Suzlon में. Sir, KNR Constructions bought at 364. ओके. सो ऊपर से थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया, लेकिन अपने डिमांड जोन पे वापस आ गया है, तो 330 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर केएनआर कंस्ट्रक्शन. तो जब तक 330 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है, यू हैव टू बी लॉन्ग ऑन केएनआर कंस्ट्रक्शन, कीपिंग सपोर्ट ऑफ 328. यू कंटिन्यू टू बी लॉन्ग. अगर 340 के ऊपर निकल जाता है, आज क्लोज आता है, तो एक मूव टुवर्ड्स 355-360 आ सकता है in KNR construction. ONGC for long term, sir. I think ONGC वीकली चार्ट की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा है. तो ऑयल इंडिया और ONGC दे हैव बीन आउटपरफॉर्मिंग द इंडेक्स. तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बने रह सकते हैं. एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड भी है, 3-4% का डिविडेंड यील्ड भी है ONGC में. तो यू हैव टू बी लॉन्ग इन ONGC. कीपिंग थोड़ा सा लंबा सपोर्ट दूंगा, तो 270-260 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. ऊपर में आपको इजीली 420-480 के टारगेट्स देख सकते हैं.
NTPC. सेम एनटीपीसी भी एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा लो बीटा काउंटर है, बट इट शुड बी इट्स अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो, इट्स अ फैंटास्टिक स्टॉक. ये भी सेम लाइक ओएनजीसी गिव्स अ गुड डिविडेंड यील्ड, 3-4% का डिविडेंड यील्ड भी छूट जाता है. तो जब तक अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 390 के स्टॉप से होल्ड कीजिए, लुक फॉर 440 ऑन द हायर साइड. अगर थोड़ा सा लंबा टाइम हराइजन है आपका तो यू कंटिन्यू टू लॉन्ग, ऊपर में 500-550 के भी टारगेट देख सकते हैं. सर JSW एनर्जी. जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो आई थिंक आज के 720 के स्टॉप से होल्ड कीजिए, ऊपर में 755 एंड 760 के टारगेट के लिए. एंड कमिंग बैक टू आवर कॉल ऑप्शन व्हिच इज कोटिंग एट 81, सो the lowest it had come is 75. When we started it was around 87-88, so a buying range remains intact at 60-65, 45 ka stop, 85 and 98 ka target. So as of now, So can you hear me? if it gets initiated, we'll definitely intervene, bring them back. So I think, yeah, we can take the queries. I think the trade is not initiated as of now. Tata Power. टाटा पावर एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है, नीचे से थोड़ा सा बॉटम आउट हुआ है और 430 के ऊपर निकल जाता है तो वापस 450 के पास आ सकता है टाटा पावर. तो अगर ट्रेडिंग पोजीशन, अगर स्विंग ट्रेड आप कर रहे हैं तो 415 के स्टॉप से लुक फॉर 440 ऑन द हायर साइड इन टाटा पावर. Sir, your overall view on the banking sector? Banking sector has been lagging mainly due to जो index के heavyweight है HDFC and Kotak Bank, they have been underperforming. Kotak Bank last 3-4 years it has not given any return on the stock. Even HDFC की बात करें तो it has been sideways to negative. तो जब आपके almost 40-50% of the weightage वाले जो stocks है जो perform नहीं कर रहे, so it becomes very difficult for index to move. And barring Axis and ICICI Bank, which are quoting at near their all-time highs, the other banking composite are not performing. So which is why थोड़ा सा sideways है, but नीचे में अभी base तो बना है 49,500 के आसपास. तो I think जब तक 49,500 hold कर रहा है तब तक ऊपर में we can see gradual move towards 52,500 and 53,000. If we see Nifty आज almost 5-6 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, बट बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट 4-5% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, तो व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट हैज बीन लैगिंग एंड अंडरपरफॉर्मिंग द अदर सेक्टर्स. तो थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन अगर 2-3 साल का आपका टाइम हराइजन है तो आई थिंक फाइनेंशियल शुड डू वेल फॉर लॉन्गर टर्म हराइजन. NBCC bought at 194, 1,000 shares. Okay, so your buying price is at almost the all-time high, the recent swing highs. तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. वीकली चार्ट भी बात करें तो 3 वीक से एक नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है, 170 नीचे में और 185 ऑन द हायर साइड. तो जब तक 170 ब्रेक नहीं करता है यू हैव टू बी लॉन्ग ऑन एनबीसीसी. एक ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा अगर 184 के ऊपर क्लोज आता है तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है एनबीसीसी में. 170 के स्टॉप्स या सपोर्ट से होल्ड कीजिए and look for 185, 190 on the high side. Sir, BHEL bought at 302. I think BHEL again narrow range में ही trade कर रहा है. I think Monday when I took the session, I guess I gave an intraday trade on BHEL. So I think आप 292 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मूव शुड कम अबाउट 303, 305. तो अगर 292 ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली इट कैन टेस्ट 310, 320 ऑन द हायर साइड. So again, if I revisit our option
23,500 call. It is again quoting at 84, 85 only. When we started the session, it was 87. नीचे में 75 max गया है, and currently quoting at 83, 84. So we are waiting for our levels only. I don't think we have to be aggressive because there is no momentum as such. 82, 84 का ही level में trade कर रहा है. We'll wait for our entry price only because there is no major swing wherein we can capture a better trade out of it. So we'll wait for our levels 60, 65, 45 and ऊपर में 85 and 98. So I think in the meantime we can give some BTST. I think Shriram Finance is one stock which is looking very good on the chart. So I think Shriram Finance is a good I think Shriram Finance is a good stock. So we'll go with Shriram Finance. I think 3190 के stop से look for 3310 on the higher side. So Shriram Finance is a good BTST candidate. Overall financial जो NBFCs है उसमें strong momentum आज देखा गया है. Be it REC, TFC, Shriram Finance, Sundaram Finance, even Bajaj Finserv Finance. So all these NBFCs have been doing good, and Shriram Finance में almost 6 दिन का एक range breakout भी देखा गया है. तो 3180 के stop से look for 3310 on the higher side. So Shriram Finance is a good BTST candidate. So you can pin that as well. So we have pinned it. Sir, okay, perfect. Yeah. So option again, I'll revisit the option. Currently 76, 77 hai. So nothing major. 73, 75 is the lowest that I've quoted after ever since we have started the session. So we'll wait for our range only. We don't be aggressive to buy the option. Yes, so next query. Sure, sir. Let me just go back to the queries. TV18 broadcast 76 buying here. TV18 76. The media as a sector has been underperforming, I think. So TV18 बहुत higher price पे उनका buying price बहुत high है, but नीचे में थोड़ा सा bottom out तो हो रहा है. तो जब तक 40 नहीं break करता है, I think आप hold कर सकते हैं position, but आपका buying price आएगा, that is very difficult. I think our buy in the option has been triggered. I think 63 का low किया है, तो जो 23,500 का call option था, हमारा buy trigger हो गया है, तो 60-65 का range था हमारा buy का. It has made a low of 63, so our stop would be 45 and we'll look for 85 and 98 on the higher side. So FINNifty का हमारा trade जो option buy है वो trigger हो गया है, 63 का low किया है, 45 का stop से we'll look for 85 and 98 on the higher side. So guys, now we are focusing more on the trade which we have given. Yes. That's why we'll take some queries, but at the end, right now, let's focus more on the. Yes. Even 15 point का move भी आ गया है, 63 का low करके 77. So एक 15 point का swing तो आया है नीचे से from our buying range. So I think it's a good narrow band में ही trade कर रहा है, तो we have bought it at almost at the lower range of the trading band. वहाँ से एक 73 का high किया है, 77 का high किया है, sorry. So I think people who have bought, they can churn their position, look for profit booking on the higher side, keeping a stop of 45 in mind. Currently quoting at 70, 71. Our range was 60 to 65, 63 का low किया है अभी 74.
Guys, please note हमने BTSC Shriram Finance already share कर दिया. We have shared 2 BTSC Shriram Finance and we have received 1 from Zeal. Shriram Finance 3244, stop loss 3190 and target is 3310. Yes. So our trade has been active as we are saying. 63 का लो किया है almost. So वहाँ से 10-15 points का swing देखा था, wherein we got 76-77 on the higher side. We'll keep a stop of 45 and look for 85 and 90 on the higher side. So Bajaj Finance is also one of the component of FINNifty. So even that is doing well. So we try to get a good trade out of it. FINNifty के अगर इंडेक्स की भी बात करें तो लास्ट 15 मिनट्स का मैं चार्ट लगाऊं तो एक नीचे में 23,550 से सपोर्ट ले रहा है, तो 540-550 से सपोर्ट ले रहा है, तो we have bought near the support zone. So I think the risk reward is in our hand, so it's in our favor as well. So we'll keep a buying range is 60-65. We'll keep a stop of 45 and look for 85 on the higher side. So currently trading within a range only. जो 60-65 का range था, currently it is trading between that only. पहले 63 का लो करके 77 का ऊपर में टिक आया था. So I think smart traders can churn their position accordingly. So थोड़ा सा और corrective move आया in our option, currently quoting at 52-53. with 54-55 है वापस. Remember our stop is 45, so kindly keep that in mind as well. So I think FINTech जो हमने I think दिन पे शेयर किया था, हमने आज इंट्राडे गेन किया है. I think when that, I think last week we shared the idea on FINTech, so even that did well. Even one of CDI idea that we have initiated is Lupin. So I think Lupin, if I share the chart, I think we have shared a CDI idea on Lupin, wherein we can keep a stop of 2087 and look for 2305 on the higher side with a target of 2305 on Lupin. So a CDI idea also we are sharing. We'll keep, we have a stop of 2087 and 2305 on the higher side target. तो लुपिन ने रेंज ब्रेकआउट दिया है, वीकली चार्ट पे पुल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद 2 वीक का कंसोलिडेशन है, एंड अगेन इट हैज स्टार्टेड इट्स अपवर्ड जर्नी. तो people who do positional trade can look into Lupin. So back to our option, 55-56 चल रहा है, a buying range was 60-65, stop of 45. तो as of now अपने buying range से 3-4 points नीचे कोट कर रहा है. So we are getting some queries कि अभी enter कर सकते हैं क्या? Yeah, definitely. Our stop is not it. No, 45 is a stop. So your risk reward is more favorable. But if the stop is you have to exit. You don't hold your position in hope. So we have a question. FINNifty 23,350 put खरीदा है. What to do? 23,350 put. Yeah. Just at 27. Okay. I'll just revisit once our trade gets what to say, either our stop gets hit or we have a strong move on the higher side. I think put लिया है तो 23,500 का put लिया है.
sir. Sorry, actually keeping dropping off. 23,350 put bought at 27. 23,350 put. Yes. Okay. Let's check. Okay. So I think I'll just revisit our trade. So it has made a low of 45. So our stop has got hit. So the trade is stopped out. So we have to exit. Our stop is hit. So we have to exit the trade. So I'll just revisit the option that you can. It is quoting at almost nothing. So I think you should exit. The put option that you bought, I think it won't work. So you have to exit your trade. And the option that we have initiated, I think our stop has got hit. 44.70 का low किया है. So I think people who have not exited, they should exit now. So one BTST idea we have shared, one CDI idea we have shared. The option trade didn't work as planned. So the index made a low of 533. We are hoping that 23,550 holds. So be it. So guys, apparently आज हमारे साथ नहीं था. Some Yes. people did some churning, but overall हमारा stop loss hit हुआ, so we did not book Yes. any profit. Made a low of 44.70, so can't help it. Again, back to our buy. Profit in the morning session, but वो यहाँ पे narrow down हो गया है. You can see people writing profit loss फिर तो सो गया, ज़्यादा loss हो गया. I understand, but you know, stock market, there are also people writing, thank you sir, I book multiple profits also, no worries अगर loss हो गया तो. I understand कि loss होने पे everyone feels sad कि money डूबा है, but it's stock market. That's why I say you need to trade continuously. So overall, when you look at the picture, you end in profit, not just छोटे मोटे sessions attend करके आप losses में हैं. We have initiated the BTST, and is there anything else, sir, that you would like to end? No, I think index Nifty wise Nifty has been strong. So I think index Nifty should outperform. ऊपर में 24,800 जब तक होल्ड कर रहा है तो तब तक 25,300 और 25,500 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं निफ्टी. So I'll revisit the option. Sadly, our stop got hit and now it is putting at 85. But for the people जिन्होंने low पे खरीदा था, they can exit, because I saw some messages, sir मैंने अभी buy किया है, what to do? You can book profits and exit, but apparently हमारा stop loss hit हो चुका है already. So our trade got stopped out almost by 30 paise. So hard. So I think Lupin is a stock that one should have for a week's time. I think it should do wonders. So that will be all, guys. Thanks a lot for joining in. We have our commodity expiry at 6 p.m. So don't forget to join that. And congratulations to the people जिन्होंने profit book किया, and we'll definitely try to recover in our next session. जिनका losses हुआ है, it's still trading at 74. You can still book your profits and exit, guys. Thank you, everyone. Thank you, Nikon sir. Thank you so much. Have a good day.